सभी को मेरा नमस्कार। विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आयोजित इस अनवरत व्याख्यान माला में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज के व्याख्यान से पूर्व में आज के स्पीकर का आप सभी के सामने परिचय रखना चाहूंगी। और सबसे पहले आज इमरजेंसी वाला लेक्चर है। किसी और स्पीकर को हमने 3-3.5 महीने पहले कहा था, मगर उनकी किसी व्यस्तता के कारण मैंने सबसे पहले डॉक्टर अरुण दास, जो मेरे एमडी में क्लासमेट रहे, और उनको मैंने फोन किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब इमरजेंसी हो गई है, तो आप ऐसे कुछ हेल्प कर दीजिए या फिर मैं आपका रखूंगी। तो डॉक्टर साहब की भी कहीं व्यस्तता थी पारिवारिक कार्यों में। तो डॉक्टर आलोक गुप्ता भी मेरे एमडी के क्लासमेट रहे। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है डॉक्टर साहब। और जामनगर वाले 3 साल बिल्कुल बहुत याद आ गए मुझे, कि जहां हमने साथ साथ में पढ़ाई की, दूसरे डिपार्टमेंट रहते हुए भी हम सारा एक साथ में पढ़ते थे, लिखते थे, लाइब्रेरी जाते थे, चाय पीते थे। तो आपने बिल्कुल कई सालों से हमारी बात नहीं हुई है, फिर भी आपने तुरंत ही अपनी कंसेंट दी। तो डॉक्टर अरुण जी दास का भी मैं बहुत बहुत लेक्चर की शुरुआत में ही हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। और साथ में डॉक्टर आलोक, आपका भी बहुत ज्यादा धन्यवाद करती हूँ कि आप जैसे स्पीकर हमेशा कहीं ना कहीं त्रय उपस्तंभ उपस्तंभ नहीं स्तंभ बनकर आ जाते हैं। तो इसलिए यह अनवरत 10वें साल में भी नियमित रूप से चल रहा है। तो सभी पार्टिसिपेंट्स का स्वागत, आपका भी विशेष स्वागत। और मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को आज के स्पीकर का परिचय दे रही हूँ। डॉक्टर आलोक मोहनलाल गुप्ता, आपने एमडी जामनगर से की है, कंसल्टेंट प्रोक्टोलॉजिस्ट है आप, और आपका ओन 8 बेडेड प्रोक्टोलॉजिकल हॉस्पिटल सिंस 27 ईयर्स आप रन कर रहे हैं। आप यू हैव परफॉर्म्ड मोर देन 40,000 14,000 anorectal surgeries using the laser, RF, vessel sealer and the फिस्टुलोस्कोप एंड क्षार सूत्र। तो ये बहुत अच्छे विद्वान स्पीकर का हमें इमरजेंसी में भी साथ मिल रहा है। तो मैं आपका पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपने ऑनररी प्रोफेसर इन SDAMC मथुरा में थे आप पहले। यू हैव अटेंड so many international and national seminars and conference, and you have presented paper and poster presentation also at various places, even in London 2019. Or you have presented paper also fistulos con in 2021 international conference on the complex fistula extended up to thigh. E-poster presentations. As a co-chairman, you have participated in so many international conferences in various parts of the India. You have also co-chair in the so many national and international conference, especially in Udupi. You have attended 25 national proctology conference also, and you have done live demo in various conference, or you have presented 7 papers, and you have done you have conducted more than 100 diagnostic camps at various places. National President of NIMA and IMA Proctology Society, एज ए जॉइंट सेक्रेटरी आप वहां अपनी भूमिका दे रहे हैं। और दूसरे भी APA में सेक्रेटरी की भी भूमिका है। राष्ट्रीय आयुर्वेद गुरु के रूप में भी आप स्थापित है। और आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो कैरियर है उसमें बहुत सारे अवार्ड्स भी आपको मिले हैं, जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क इन प्रोक्टोलॉजी पुणे 2020, लोकमत टाइम्स एक्सेलेंट इन हेल्थ केयर अवार्ड मई 2022, and Son of Soil by Sakala Maharashtra Idols, third prize winner at the poster presentation in ACR SICON 2022 at Jaipur। कोलोरेक्टल सर्जरी का एक महाकुंभ था, और हमें पता है कि सभी जगह प्रशंसा हुई थी, जयपुर की भी। और आप सभी वहां बहुत सारे प्रोक्टोलॉजिस्ट आए थे। गुरुवर्य वैद्य श्रीकांत द्विवेदी सर सालाक्य तंत्र अवार्ड से भी आपको 2024 में नवाजा गया है। और यू हैव ऑल्सो गॉट अवार्ड
from the Dhanvantri Award at Nagpur in 2024. तो मैंने ब्रीफ में सभी पार्टिसिपेंट्स के सामने आज का बायोडेटा रखा है और ये बायोडेटा हम इसलिए भी आप सभी पार्टिसिपेंट्स को बताते हैं कि क्योंकि बहुत सारे मेरे यूजी के स्टूडेंट्स जो अभी राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में पढ़ रहे हैं वो और नो डाउट पीजी पीएचडी और कुछ प्रैक्टिशनर भी जुड़ते हैं, उन सभी के लिए एक प्रेरणा का कार्य करे कि एक व्यक्ति अपने जीवन में कितना सफलतम परिश्रम करके उसमें एक अपना मुकाम बना सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप यहाँ पधारे और आज के लेक्चर्स के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू डॉक्टर आलोक। डॉक्टर साहब अभी भी वॉइस नहीं है डॉक्टर साहब, वॉइस वॉइस हाँ अब हो गया। अब ओके है मैडम, जी जी ओके डॉक्टर साहब शुरू करें। ओके मैडम। Thank you, Dr. Hital madam. First of all, I am thankful for giving me opportunity to present my work here. मैडम स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ जी डॉक्टर साहब जी। हाँ मैडम, हाँ ये दिख रहा है? हाँ जी जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर हेलो। साहब स्क्रीन, हाँ जी 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 डॉक्टर साहब स्क्रीन ओके शेयर हो रही है। ओके मैडम, स्लाइड का शेयर, स्लाइड शो होना। जी फर्स्ट स्लाइड आ गई फिशर, हाँ जी हाँ हाँ जी हाँ जी मैडम, फुल स्क्रीन हो गया जी डॉक्टर साहब। ओके मैडम। जी जी वेलकम। Madam, today's my topic is common anorectal disorders, in which there are common diseases like fissure in ano, second one is hemorrhoids, third one is fistula in ano, fourth one is pyeloneal sinus, and fifth one is prolapse rectum. But in this disorder, three diseases are main. First one is fissure, second one is fistula, and third one is hemorrhoids or piles. So we will see one by one. First one is fissure in ano. Fissure is a longitudinal split in the anorectum, anoderm of the distal anal canal, which extends from the anal verge proximally towards dentate line. तो आप सभी विद्यार्थियों से मैं बोलना चाहूंगा कि जो फिशर होता है, जो एनल कैनल होती है, उसमें एनल वर्ज से लेके एनोडर्म तक एक अल्सर हो जाता है, उसे फिशर कहते हैं हम। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये पहले जो फोटोग्राफ है उसमें पोस्टीरियर फिशर है और सेकंड जो फोटोग्राफ है उसमें एंटीरियर फिशर है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकॉर्डिंग टू लोकेशन, टू टाइप ऑफ फिशर. फर्स्ट वन इज पोस्टीरियर. इट इज कॉमन इन बोथ सेक्सेस, मेल एंड फीमेल. इट इज occur due to trauma. Anterior anal fissure, it is common in females. It occurs due to lack of support to pelvic floor muscle. Okay. The clinical features of fissure are constipation, burning sensation after defecation, passage of fresh blood in the form of streaks, and itching and discharge. These are the clinical features of fissure. In chronic fissure, there are sentinel tag. In chronic patient of fissure, there are sentinel tag which is present at outside of the anal canal. So it is called as sentinel tag. Sentinel means guard. So it is called as sentinel tag. It is present outside the anal canal. Okay. In differential diagnosis, we can differentiate from carcinoma anal canal. In carcinoma anal canal, there is cauliflower-like growth. So on PR examination, it bleeds on touch. Second one is inflammatory bowel diseases. In inflammatory, there may be multiple fissure, and when in venereal diseases, we can diagnose by doing a blood test.
In tubercular ulcer, the ulcer may be ulcer margin may be introverted and patient look may be caucasic. We can diagnose by X-ray chest or other PCR tuberculosis. We can diagnose by doing this test. Last one is proctalgia fugax. Proctalgia fugax means, according to Ayurveda, it is in this condition, patient come with nocturnal pain. During night, patient come with very severe pain, and it will reduce by given by basti. According to Ayurveda, we are giving basti in proctalgia fugax, and patient get relief by taking basti. Treatment part. In conservative management, adequate fluid intake should be taken. 6 to 8 glass of liquid. Fiber-rich diet should be taken. Bulk forming laxative should be taken, like isabgol husk in a patient with colitis, and stool softener in patient of constipation. For local management, we can use lignocaine and metronidazole combination with the brand name anometrozole, which contain metronidazole, lignocaine, and sucralfate. And patient should take seed bath. In operative management, there are two types of treatment. First one is lateral anal sphincterotomy. Second one is anal advancement flap. So, when patient is having sphincter spasm, then we should perform lateral anal sphincterotomy. And in old age patient, when patient is not having so much sphincter spasm, then we have to perform anal advancement flap. For conservative management, we should prescribe triflavugul 500 BD or TDS for 1 month, Panchatikta Ghrutagugul 500 mg BD or TDS, Panchavalkal Koth or Shuddha Tankan Spatik for seeds bath, Jatyadi Tel for Matravasti and local application, Abhayarishta for Agnivardhan and to relieve the constipation, Kutajarishta in colitis patient, we can prescribe Kutajarishta. Can you hear me, madam? Voice is clear? Hmm? Okay. Uh, in lateral anal sphincterotomy, according to this figure, we are taking incision at intersphincteric groove and we are separating the internal anal sphincter. Then we cut internal anal sphincter with the help of pottery or laser. Now we will see, and that wound is closed by suture. Now we will see the video of this procedure. Hmm? Video आ रहा है? Okay. ऋषि को बुला लो. 1 minute, madam. Video is not playing. But a video playing. Now we are taking incision at intersphincteric groove. Now we are separating the internal sphincter with the help of mosquito forceps. Internal sphincter is hooked and it is cut with the help of diode laser machine. Can you appreciate, madam? जी डॉक्टर साहब, यहाँ से Okay. बहुत अच्छा क्लियर विजन है. दिख रहा है ना क्लियर? जी, जी, हाँ हाँ बहुत मैडम. अच्छा दिख बेटा रहा है. स्लाइड.
Now we will see the fistula in ano. Fistula in ano is a fistulous connection between the exterior and the anal canal or rectum. फिर ये वीडियो रन नहीं हो रहा बेटा, बैक चलना पड़ेगा. In anal canal, there are multiple anal glands and anal crypts. When anal crypts become infected, then abscess is developed due to infection of anal crypt. That abscess may burst spontaneously or it was drained by surgeon. After draining the pus, in some patient or 50% patient, there may develop fistula in ano. वहां से शुरू होगा क्यों? Diagnosis of fistula in ano. We can diagnose fistula in ano by examining under anesthesia with the help of proctoscope, or while doing PR examination, we can appreciate the internal opening of fistula in ano by digital rectal examination. And other methods are by injecting the hydrogen peroxide and methylene blue from external opening, then we can appreciate the internal opening. Other methods are endoanal ultrasonography and MRI. MRI is gold standard method for diagnosing the fistula in ano. Other methods are fistulography and CT scan, which are not gold standard. So we are using MRI fistulogram for diagnosing the fistula in ano. In this diagram, first one is MRI fistulogram, in which we can appreciate the fistula, suprasphincteric fistula in coronal view. Second diagram is endoanal ultrasonogram, in which transplanted fistula is appreciated, which is started from 6 o'clock, and internal opening is also at 6 o'clock. For examination and rule out the internal opening, there is rule which is called as Gulsar's rule. In this rule, when patient is in lithotomy position, we draw a transverse line from 3 o'clock to 9 o'clock, which line. When internal opening lies above the anterior part, then the fistulous tract may radial, and when it lies, external opening lies below the or posterior side, then the tract may be curved and internal opening may be at 6 o'clock. Again, second method is retrograde probing. In second diagram, you can appreciate the photo of probe. When external opening is not there, then we are doing retrograde probing. From internal opening to external opening, we are doing probing. By this way, we can appreciate or we can confirm the track of the fistula and internal opening of the fistula. By this method, we can diagnose the fistulous tract. That is Gulsar's rule. There are four types of, according to Parks, there are four types of fistula in ano. First one is intersphincteric, which lies between the two sphincter, that is external sphincter and internal sphincter. Second one is transsphincteric fistula. It crosses the both the sphincter, so it is called transsphincteric fistula. Third one is suprasphincteric fistula. In this fistula crosses the all sphincter and open in anal canal at dentate line. So it is called suprasphincteric. Fourth one is extrasphincteric fistula. It in this fistula,
there is not involvement of any sphincter, so it is called as extrasphincteric fistula. Now we will see the management. In the management of fistula, our goal of therapy should be draining of local infection, eradication of fistulous tract, and avoidance of recurrence. In fistula, once recurrence is accepted, but incontinency is not accepted. So in fistula, we have to avoid incontinency. For surgical management, there are 5 types of surgical management. First is fistulotomy, second one is fistulectomy, third one is Seton technique, fourth one is advancement flap and glue, sixth one is lift procedure. Now we will see the step by step. First one is fistulotomy. It is invented by John Adrene 600 years ago. Fistula tract must be laid open from its termination to its source. It involves division of all those structures lying between the external and internal opening. It is used for intrasphincteric fistula and transsphincteric fistula, which involve less than 30% of voluntary muscles, and granulation tissue is curated and sent for HP study. Second one is fistulectomy. This technique involves coring out of fistula, usually by diathermy or cautery or laser. It allows better definition of fistula anatomy than fistulotomy, especially the level at which the tract crosses the sphincter and the presence of secondary extension. Now, in this diagram, we can see in diagram A, we are probing the fistula tract. In diagram B, we are done the fistulotomy from from inner side to outer side. In third C diagram, we have curated the fistula tract, and fourth diagram D, in D diagram, we have malsuturized the wound. We have shallow the wound by taking some sutures. Now we will see the fistulotomy video of fistulotomy. This patient is having posterior fistula from 6 o'clock to dented line. Now we are doing fistulotomy with the help of diathermy machine or cautery machine. Now, second method is fistulectomy. In this method, we are coring the total complete fistula tract. You can appreciate this is Y-shaped fistula having external opening in right and left ischiorrectal fossa. We have completely cored out as shown in figure. We have removed complete fistula tract by coring and fistulectomy method. The end result of this fistula patient is, you can appreciate in this slide, the end result is like this. Patient is completely cured. Now the Seton. In Seton method, there are 2 types of Seton. First is draining Seton, that is called loose Seton. If patient is having large cavity, for draining the cavity, we are placing loose Seton or draining Seton. Second one is cutting Seton. That is also in Ayurveda, we are using cutting Seton as a Shar Sutra. In some patient, we are using Shar Sutra for cutting the fistula tract. Routinely, we are doing fistulectomy as mentioned by Sushruta and doing Agni Karma. So, we are using less Seton for patient. Treatment part in high transsphincteric and suprasphincteric fistula are treated by initial placement of Seton
or we are doing fistulectomy from inner side and outer side. For extrasphincteric fistula are rare, and treatment depends upon both the anatomy of the fistula and its etiology. So these are the treatment of main treatment of fistula in ano, and we are taking biopsy of all fistula tract, and we are sending it for HP study, for histopathological study, to rule out the secondary fistula. Fistula may be due to tuberculosis, Crohn disease, or ulcerative colitis, or proctitis, radiation proctitis. So we should send biopsy of fistula tract to rule out the secondary fistula. Leap procedure. This is invented by Dr. Arun Rojana Sankul in 2007. Dr. Arun Rojana Sankul is from Thailand. This procedure is sphincter saving procedure. It is very good procedure. Mostly we are using this procedure in females which are having anterior fistula in ano. In this diagram, you can appreciate this patient is having transphincteric fistula, and we have dissect this intersphincteric fistula, and we have closed the intersphincteric defect, and external defect in external sphincteric is also closed in this procedure. Now we will the fourth one is VAPT, that is video assisted fistula treatment. We will see the video of this procedure also. With the help of fistuloscope, I am doing this procedure. This is the inner view of fistula tract. With the help of fistula tract, we are scooping all the dirty granulation tissue, and after that, we are cleaning the fistula tract with the help of endo brush, and with the help of laser, we are ablating the tract. This procedure is very minimal invasive procedure and having very good results. Uh, Madam, before some days, we have presented one case in international journal. It was published. That case was uh, unusual fistula or complex fistula, which was extended up to thigh, and that case was published in surgical case report by Oxford. It was internationally published. That patient was done by me before 1 year, and national paper has taken cognizance for this publication also. This is press note or news from Lokmat. This paper is national paper. So that paper and other paper has taken cognizance for that. The third disease is hemorrhoids. Hemorrhoids are symptomatic anal cushion. These hemorrhoidal venous cushions are normal structure of anorectum and universally present in all persons unless previous intervention has taken place. Hemorrhoids become symptomatic when cushion slides, engorge, prolapse, or bleed. These anal cushions plays important role in maintaining the continence. They play 20% role in maintaining the continence. They play role as a plug in anal canal. So patient can maintain continence. These are located at 3, 7, and 11 o'clock, and their types are internal hemorrhoids and external hemorrhoids. Etiology and pathogenesis of hemorrhoids: hereditary, constipation, prolonged straining, diarrhea, pregnancy, erect posture, absence of wall within the hemorrhoidal sinusoids, increased intra-abdominal pressure, aging, and internal sphincter abnormalities like lax sphincter. Clinical presentation:
painless bleeding, bright red blood associated with defecation. Second one is prolapse according to grade. Third one is pain when piles become thrombosed or strangulated. Swelling in thrombosed hemorrhoids. Anemia due to excessive bleeding. Constipation, pruritus, and swelling. These are the clinical presentation of hemorrhoids. And complications are thrombosis, strangulation, and ulceration. Now we will say the gradation of hemorrhoids. These are the gradation of hemorrhoids. There are four grades of hemorrhoids. First one is first degree internal hemorrhoids. In first degree hemorrhoids, they they present in internal anal canal. Second one is during defecation they protrude during defecation and gets spontaneously reduced. In third degree, they protrude during defecation and we have to manually reposition it. In fourth degree, they are irreducible. So these are the degree or gradation of hemorrhoids. Differential diagnosis, uh, rectal polyp. In rectal polyp, the structure is polypoidal, which protrude during the defecation. In hemorrhoids, they are crescentic. They are present at 3, 7, 11 o'clock. Second one is carcinoma. In carcinoma, the growth is like cauliflower and which bleeds on touch. Third one is hypertrophic anal papilla. These are the polypoidal structure present at dentate line and associated with fissure in ano. Fourth one is rectal prolapse. In rectal prolapse, circumferential prolapse is there either with mucosa, only mucosa, or complete rectal wall. So these are the differential diagnosis of hemorrhoids. Diagnosis by history. A patient may give history of bleeding, a painless bleeding, something is coming out, that is prolapse. By inspecting, by the inspection method, we can appreciate external component if patient is having external hemorrhoids. By digital rectal examination, piles cannot be diagnosed by digital rectal examination. Only thrombosed hemorrhoid can be diagnosed by digital rectal examination. By proctoscopic examination, we can diagnose internal hemorrhoids. And in squatting position, during defecation, we can examine and we can appreciate the protrusion of hemorrhoidal mass. These are the interexternal hemorrhoids as shown in figure. These are the complication complication like thrombus, strangulated piles, ulceration, and last photo is necrosis of hemorrhoids. Now we can see the treatment part. First one is sclerotherapy, second one is rubber band, third one is radiofrequency or diathermy, fourth one is laser therapy. First one is sclerotherapy. In this method, we are injecting the chemical agent on the hemorrhoidal plexus submucosally. Indication: first, second, and early third degree hemorrhoids. It is used in this condition. In this figure, we can appreciate how we can apply the sclerogen. We are applying sclerogen submucosally at the apex of the hemorrhoids. Now we will see the video of sclerotherapy. This patient is having second degree hemorrhoids. We are injecting sclerogen agent 2 centimeter above the dentate line submucosally. Now the red color mucosa becomes white. Our teacher Dr. Sangvi sir said always cherry become rasgulla. The red color become white. So they are called in it
cherry become rasgulla. Second one is rubber band ligation. This technique is usually indicated in pedunculated first, second, and early third degree internal hemorrhoids. Currently, rubber band procedure is one of the commonly used outpatient procedure. Now we will see the video of rubber band ligation. These are the instruments required for rubber band ligation. First one is Barron's gun. Second one is forceps. We have hold the pile mass with the help of forceps. Now we are applying the Barron's gun for ligating the rubber band. We have ligated the rubber band to hemorrhoids, internal hemorrhoids. Now you can appreciate ligation of rubber band on internal hemorrhoids. The band is ligated on hemorrhoid. Now laser in hemorrhoids. This procedure is very good, having very good coagulation. It is relatively easy with less bleeding and pain. This is because of specific wavelength of this type of laser, that is diode laser. Mostly diode laser is most adequately used in laser in surgical proctology. This is diode laser machine of lasertronics machine. This machine is having three types of fibers. First one is bare fiber, which is used for fissure in ano. Second one is conical fiber, which is used for hemorrhoids. Third one is radial fiber. This fiber is used for fistula in ano and pilonidal sinus. In lithotomy position under local anesthesia or general anesthesia or spinal anesthesia, this procedure can be performed. The laser beam light is applied with the dedicated handle and is slowly moved on the area to be treated until total tissue destruction. It can be done on all hemorrhoids in one sitting. Procedure can be performed in 20 to 30 minutes. In this diagram, in first diagram, the laser probe is inserted submucosally about a dentate line. In second photograph, the pile mass is ablated with the help of diode laser. Now we will see the video of diode laser or LHP. This patient is having second grade hemorrhoids. This is laser machine. In this procedure, we are first ligating hemorrhoidal artery 2 centimeter and 4 centimeter above the dentate line. We are ligating hemorrhoidal artery with the help of 20 Vicryl rapid. After that, we are doing laser treatment, which is called as laser hemorrhoidoplasty. We are injecting the laser probe from dentate line. We are ablating the hemorrhoidal cushion in fan shape manner. We are delivering the laser energy up to 200 joules. In this procedure, we have used 170 joules.
In my setup, I am routinely use video rectoscope, which is used for diagnostic purpose, where we can show to uh, the patient having which disease and which stage. And second one is manometer. It is used for knowing the tone of the sphincter muscle, that is internal sphincter and external sphincter. We are doing regularly manometry in fistula patient and in fissure patient. Some patient are coming with incontinency. It is very helpful for knowing the tone of the sphincter muscle. In second photographs, we are routinely doing coloscopy to rule out the another pathology like CA rectum, ulcerative colitis, Crohn disease, and rectal polyps. These are the advanced machine which are routinely used. First one is radio frequency machine. It is American machine used in all proctological procedure. Second one is vessel sealer machine. It is also used, and by this machine we can do the bloodless procedure. Last one is laser machine, 1470 diode laser machine. It is imported machine made by Holland. The advantage of new techniques, it is less invasive, less painful, less bleeding, less trauma, heal faster, does not cause any scar, can be treated in ambulatory condition with just local anesthesia also. I am the first Ayurvedic surgeon to perform warp surgery for fistula in ano. Again, I am first user of sphincterometer in Ayurvedic faculty. Also, I have performed lavatroplasty. In that also, I am the first Ayurvedic surgeon who has performed lavatroplasty for prolapse rectum. Dr. Arun Rojana Sankul was the inventor of lift procedure. He had felicitated me in Udaipur conference for presentation of paper on prolapse rectum. I have already presented video presentation in Fistulocon. It was international conference in 2021. I have presented a case extended of fistula in ano extended up to thigh. For that, in another conference, I have got third video presentation prize. This is my certificate for third video presentation. I have win third video presentation, third prize of video presentation. I have also presented one paper in London, and I have visited to St. Mark Hospital. It is the well-known hospital, international hospital for colorectal surgery. I have attended many conferences, and in live workshop, I have given my services for live demonstration. Thank you, madam. Thank you very much. हेलो. जी नमस्कार डॉक्टर साहब जी। हाँ मैडम, हाँ मैडम. थोड़ा समय कम रहने की वजह से शॉर्ट में मैं बोल पाया मैडम. जी जी। हाँ हाँ. हाँ तो जी। प्रिपरेशन के लिए ज्यादा समय नहीं मिला था, तो वो हिसाब से जो भी मैं शेयर कर सका शेयर किया. हाँ जी। हाँ उसमें किसी भी जो भी डेलीगेट प्रेजेंट है उनको कोई क्यूरी होगी तो वो मुझसे पूछ सकते हैं. जी 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 बिल्कुल। मैं हाँ मैडम. पार्टिसिपेंट्स को एक बात बताना तो भूल ही गई, अभी डॉक्टर साहब का प्रैक्टिस का टाइम है, उसके बावजूद भी उन्होंने हाँ हाँ है ना तुरंत ही समय दिया, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इससे पहले भी जैसे प्रदीप मैडनिक सर आए थे तो उन्होंने उस समय की फिर है ना 1 घंटे की अपॉइंटमेंट नहीं दी थी, इस तरीके से किया हाँ था। हाँ. अब अगर आपने मेरी इमरजेंसी में आज किया वैसे तो क्या. मैं समझ सकती हूँ कि हमारे पास 1 घंटा है, और मैं जो भी पार्टिसिपेंट्स अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं हाँ. माइक्रोफोन वो ऐसे अनम्यूट रखा है, तो आप बताइए अपना
अपना हैंड रेस करिए, तो हम सर से अभी अपने पास 14 मिनट है, हम उसमें से पूछ सकते हैं, डॉक्टर साहब से बात। मुझे वैसे भी इंटरेक्शन सेशन ज्यादा अच्छा लगता है मैडम, जी 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 क्योंकि जी बिल्कुल। जो भी हमारे पार्टिसिपेंट है उनका जो हाँ भी जी उनके मन में क्यूरी है, जी तो जी मैं उनका एनोरेक्टल से रिलेटेड जो भी क्यूरी है उसका समाधान कर दूंगा। जी 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 बिल्कुल। तो पार्टिसिपेंट में से किसी को कुछ पूछना है तो आप बताइए। अ, हम बारी बारी जैसे प्रत्येक लेक्चर में हम लेते हैं, डॉक्टर उज्ज्वला, डॉक्टर अर्शिया, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, डॉक्टर उषा होला, डॉक्टर गीता। अच्छा हाँ हाँ, डॉक्टर उज्ज्वला आप अनम्यूट करके पूछिए। जी नमस्ते सर। बहुत ही अच्छा नमस्ते। प्रेजेंटेशन था। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैडम। सर मुझे पूछना था कि जो ओल्ड एज मतलब ओल्ड एज में बहुत वृक्षता आने से मलबद्धता होती है और उसके बाद पेशेंट को पाइल्स भी होते हैं और फिशर भी होते हैं। और मेरी एक पेशेंट है जिसको अम्ल पित्त भी है बहुत सीवियर, मतलब उसको उरोदहा भी होता है और रात को उल्टियां भी होती है, अम्ल सर्दी ठीक है ना। और सीवियर कॉन्स्टिपेशन उसको। तो हाँ, वही आंत्र में तो बहुत ही रुक्षता है और ऊपर पूरा विदग्धता है। तो ऐसे पेशेंट में वो सर्जरी के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है। ओके। ओके तो ओके। यहाँ पे मैंने उनको जात्यादि तेल लगाया है पीछू और हम्म त्रिवृत्त लेह दिया है, हम्म। क्योंकि रुक्षता है तो ज्यादा मैंने चूर्ण वगैरह नहीं यूज किया। नहीं, और चूर्ण कम ही दीजिए क्योंकि रुक्षता है ऑलरेडी। हाँ ऐसे सर। पेशेंट में आप तो शुंठी सिद्ध एरंडा तेल दे सकते हैं उनको, या तो फिर हाँ आप क्या कर सकते हैं, वैसा थोड़ा उनको एसिडिटी ज्यादा हो रही है तो एक्चुअली वो पेशेंट में हमको कैसा मृदु विरेचन ही देना चाहिए, देना भी है तो। पर ज्यादा बेटर रहेगा कि आप उनको बस्ती देके तो बहुत अच्छा है, जात्यादि तेल की मात्रा बस्ती अगर देते हैं तो ज्यादा बेटर है, तो उनकी रुक्षता भी कम हो जाएंगी, लुब्रिकेशन भी हो जाएगा, और अगर उनको मोशन पास हुई अच्छे से तो उनका अम्ल पित्त भी कम हो जाएगा। सर, मात्रा बस्ती कितने दिन दे और प्रमाण कितना रखे सर? मात्रा बस्ती कैसा है मैडम, हम तो यहाँ पे 30 ml देते हैं जात्यादि तेल का, और पेशेंट को हम उसमें क्या करते हैं, हमारे यहाँ तो हमने पैटर्न ऐसा बनाया, 30 ml जात्यादि तेल और 20 ml ल्यूक वार्म वाटर। तो इस तरह हम रात में दे देते हैं उनको, तो उससे पेशेंट को काफी आराम हो जाता है, उससे हीलिंग भी हो जाता है फीचर में, और लुब्रिकेशन हो जाने से उनका जो कॉन्स्टिपेशन है वो भी रिलीव हो जाता है। सर कितने दिन दे सर? हाँ हाँ, आप मात्रा बस्ती के लिए तो ऐसा कोई समय का ये नहीं है, पर 3 वीक्स मिनिमम आप दे सकते हैं। ओके सर, और पाइल्स के लिए उनको क्या दे कि जिससे उसका पाइल्स मास भी कम हो जाए और फिशर भी हिल जाए, ऐसे कोई है क्या सर योग? हाँ, एक्चुअली कैसा है देखिए, पाइल्स के लिए ना आप उनको जैसा मार्केट प्रिपरेशन आता है, एक कुल टैप बोल के वासुगंधी का बहुत अच्छा प्रिपरेशन है, और अपने शास्त्रोक्त अगर आपको देना है तो आप उनको सूरन वटक दे दीजिए, बहुत अच्छा रहता है उसके रिजल्ट, तो वो दीजिए। पर एक्चुअली कैसा, पाइल्स में आप उसकी डिग्री देखना होगा, अगर आप 3rd डिग्री का पेशेंट है और उसमें आप सिर्फ मेडिसिन दोगे तो नहीं होगा, पेशेंट के हमारे को स्टेज के हिसाब से ट्रीटमेंट करनी होती है पाइल्स में। पेशेंट 1st डिग्री है तो हम उसको मेडिसिन देते हैं, 2nd डिग्री में स्क्लेरो हम एडवाइस करते हैं, 3rd डिग्री अगर 4th डिग्री है तो मेडिसिन देके कोई फायदा नहीं होगा। एक तो पहले कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट है, तो उनको आज नहीं कल ऑपरेट करना ही पड़ेगा, उनको हमको कन्विंस करना ही पड़ेगा अगर क्यूर करना है तो, है ना। पहले आप सब कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करके देख लीजिए, अगर इससे भी उनको रिलीफ नहीं होता है तो फिर आप सर्जरी के लिए उनको एडवाइस करिए, ठीक है। जी सर। सर आपका ओके नंबर शेयर करेंगे तो मैं आपको रिपोर्ट्स भेजूंगी, अभी मुझे मिल नहीं रहा है रिपोर्ट्स। ठीक है। ओके 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 मैडम। सर, धन्यवाद सर। ओके मैडम, ओके, ओके, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आलोक, डॉक्टर उज्ज्वला। डॉक्टर पवित्रा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। नमस्ते सर, नमस्ते मैम।
सर मेरा ये क्वेश्चन है डायग्नोसिस के मतलब बहुत ही ऐसा होता है कि जो पाइल्स के पेशेंट होते हैं वो लोग हर बार ऐसा बोलते रहते हैं मतलब जनरली कि हम लोग तीखा खाते हैं ना तो हमारी ये दिक्कत बढ़ जाती है और अगर तीखा खाना कम कर दे तो ये दिक्कत कम हो जाती है। तो सर आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम डायग्नोसिस सिर्फ देखने चाहे तो विदग्धा जीर्ण मान सकते हैं सर कि विदग्धा जीर्ण होने की वजह से इनको दिक्कत हो रही है ज्यादा कि कुछ और भी होगा हाँ, रीजन? विदग्धर जीर्ण आपने बरोबर कहा, पर आयुर्वेद में देखिए पहले ही हमको हमने बताया कि आचार्यों ने बताया कि अर्श और ग्रहणी ये अग्नि मांद्य के वजह से होते हैं, है ना। तो हमको पहले उनका अग्निवर्धन करना होगा, है कि नहीं। हम्म। तो वो हिसाब से और कैसा हाँ है कि अगर वो तीखा खाते हैं तो तीखा खाने से उनको बर्निंग सेंसेशन भी होगा, है ना। प्रोक्टाइटिस होता है बहुत से पेशेंट को, तो इसलिए आपको हम्म, थोड़ा तीखा अवॉइड करने को हाँ बोलना पड़ेगा। और आयुर्वेद में बताया मैडम कि जैसा ओके हमको पहले निदान परिवर्जन करना है कोई भी चीज का, है ना। कोई डिसीज का वो निदान हाँ सेवन कर रहा है पेशेंट, तो हमको कन्विंस करना होगा कि आपको निदान परिवर्जन हम्म करो करके आप पहले, है ना। तो पेशेंट को हम्म, अगर वो सुनेंगे नहीं तो उनको रिलीफ भी नहीं होगा, है ना। आपको पहले समझाना होगा उनको निदान परिवर्जन के हिसाब से आपको उनको मीठा खाना बंद ओके कराना पड़ेगा, है ना। और साथ ही साथ आपको अग्निवर्धन कराना ओके है। शायद ये पेशेंट हो सकता है कि वो पित्त प्रकृति ओके के होंगे, तो उनको वो हिसाब से सूचेकर कामदूदा या दाढ़ी मावल है वो भी देना पड़ेगा आपको, है ना। तो हम प्रकृति ओके के हिसाब से और और सर दोष के हिसाब से भी यानी अर्श में हमको चिकित्सा करनी चाहिए एक्चुअली। ओके ठीक है ना, वो हम थोड़ा सा बहुत सी बार क्या मॉडर्न की तरफ चल जाते हैं। आज मुझे आयुर्वेदिक भी इसमें थोड़ा सा टॉपिक लेना था, पर ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम यानी मुझे समय नहीं मिला ये सब स्लाइड बना, मेरा प्रैक्टिस का जो शेड्यूल रहता है तो काफी बिजी रहता है, और इतने मैं कम समय पे मैं बहुत सी चीजें नहीं दे सका आपको जो और मुझे देना चाहिए था। तो मैं पूरा मॉडर्न का ही आपका टॉपिक लिया आज का। पर आयुर्वेद के हिसाब से हम सोचते हैं तो हमको दोष का भी सोचना चाहिए। ओके ओके। ठीक है सर। डॉक्टर साहब धन्यवाद। डॉक्टर अर्शिया, आस्क योर क्वेश्चन। जी। सर मुझे ये पूछना था जैसे आपने बताया अभी अर्श में अग्निमांद्य होता है और जैसे अभी उनको उष्ण तीक्ष्ण पदार्थों से वो तकलीफ बढ़ जाती है तो अभी अग्निमांद्य की चिकित्सा में तो जनरली हम उष्ण तीक्ष्ण औषधि यूज करते हैं तो फिर उसमें हमें कैसे औषधि योजना करनी चाहिए अग्निमांद्य दूर करने के लिए? नहीं, जैसा अगर पित्त प्रकृति है तो मैडम उसमें ऑलरेडी पित्त प्रकोप होने की वजह से ब्लीडिंग और ये सब चीजें होती है, उसमें दाह वगैरह होता है। तो वो पेशेंट में तो हम हम्म, सूक्ष्मकर कामदेवदा वगैरह देते हैं, यानी आम यानी सामता रही तो सूक्ष्मकर देते हैं। बाकी निरामता आ गई तो कामदेवदा दाढ़ी मावले ऐसा देते हैं। बाकी वातज और हम्म, कफज में हमको अग्निवर्धन करना है ना। मेनली हमको वहां पे अग्निवर्धन करना है। उसके लिए हम जनरली आसो अरिष्ट यूज करते हैं, है ना। अभय अरिष्ट यूज अच्छा। करते हैं, कुमारी आसो यूज करते हैं। तो हम्म, बहुत सी बार हम 50-100 यूज करते हैं। तो हमको वात और कफ में हमको अग्निवर्धन करना है। अगर पित्त दर्श है तो उसमें हमको अग्निवर्धन की जरूरत नहीं, वहां पे ऑलरेडी सिर्फ सामता है तो उसके हिसाब से हमको निरामता लाना है। ठीक है ना मैडम। ठीक है जी ठीक है धन्यवाद। सर थैंक यू। जी जी, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। सही कहा, ये अग्निमांद्य वाली चिकित्सा तो मेरे पास भी गायनी में जो कई बार पेशेंट होते हैं ना कि नहीं मैडम पहले आप ही दवाई देख लो, एक बार देखे उधर ना हाँ दूसरे जी। डिपार्टमेंट में जाना पड़े। तो ये सच में बहुत अच्छा है कि अग्निमांद्य वाला हम्म, कॉन्सेप्ट से हम करते हैं ना तो पेशेंट बड़ी खुश हो जाती है। मैडम मैं कह रही थी आप एम ही भेज रहे थे उधर उस डिपार्टमेंट में। सही बात है। हम्म। डॉक्टर शुभम आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। हम 5 मिनट प्रश्न ले पाएंगे और जितने हो सके उतना लेने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं डॉक्टर साहब का फिर से एक बार 1 घंटे का हम है ना क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। डॉक्टर साहब थोड़ा सा आयुर्वेद क्वेश्चन आंसर बताइएगा। कैसे भी लीजिए मैडम। हाँ जी, आधे हाँ, घंटे का उसमें मुझे आयुर्वेद भी का अच्छा आधे घंटे लगेगा। का क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं और हमारे कुछ हाँ। पार्टिसिपेंट्स तो है ना यूं 3-4 कंटिन्यूस क्वेश्चन रहते हैं उनके। तो मैं ओके अभी मैम। 5 मिनट लेके फिर हम डॉक्टर साहब से, क्योंकि हमने 1 घंटे की ही समय लिया है, तो बाद में मैं हाँ फिर से हाँ भी आमंत्रित करूंगी, है ना। हाँ जी, डॉक्टर शुभम बताइए आप। हाँ, शुभम जी बोलिए सर बोलिए। सर नमस्ते, शुभम हजारी बात नमस्ते। कर रहा हूँ सर। अरे नमस्ते शुभम जी। नमस्ते नमस्ते। हाँ बोलिए कुछ नहीं बोलिए। सर, आपका देख रहा था तो मैंने बोला एक क्वेश्चन मैं भी पूछ लूं। अरे भाई पूछिए सर पूछिए क्या। मैं ये पूछ रहा था सर, एंटेरियर मतलब आयुर्वेदिक तरीके से ये अपना रेक्टम प्रोलैप जो है तो इसमें मूषक तेल और चांगरी गुरुत्व का कितना रिजल्ट आ सकता है और कैसे ही मतलब कैसा?
हाँ शुभम जी, इसमें ऐसा है कि अगर पार्शियल प्रोलैप्स है, म्यूकोजल प्रोलैप्स है, तो हम रूटीनली मूषक सिद्ध तेल की बस्ती देते हैं या तो उनको पीछे रखने के लिए बोलते हैं। पर ये रिजल्ट में जो यंग बच्चे आते हैं हमारे पास 10 साल 12 साल वाले, तो वो पेशेंट में अच्छे रिजल्ट देखे, क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट एज में रहते हैं वो, तो वहां पे टोन आ जाता है। ओल्ड एज में और कंप्लीट प्रोलैप्स में इसके इतने रिजल्ट यस। नहीं मिलते, वहां हमको सर्जरी करनी होती है। ठीक है डॉक्टर साहब? जी सर, जी सर, जी सर। जी थैंक हाँ यू डॉक्टर सर। साहब। धन्यवाद डॉक्टर ओके। शिवम। डॉक्टर उषा, आप अपना प्रश्न पूछ थैंक यू। लीजिए। Namaste, sir. Very good नमस्ते मैडम। presentation. Very good थैंक यू मैडम। presentation. थैंक यू मैडम। In hemorrhoids, how successful is laser treatment? Laser treatment, it is very success, madam. You can treat for any degree of hemorrhoids with the help of laser, madam. From 2nd degree to 4th degree, madam. Okay. Thank you. Okay, madam. Welcome. जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर अक्षता, ask your question. Yes, ma'am. Sir, I have seen one patient. उसमें pedunculated growth था सर, internally. Hemorrhoids नहीं था, 2-3 ऐसे डॉट फॉर्म में था, तो उसको हम क्या कैसे कुछ ट्रीट कर सकते हैं? क्योंकि वो देखिए स्लिप हो रहा था ऐसे हाथ से, वो तो ओके इंटरनल ओके। हिमोरॉइड्स नहीं था। हाँ, वो हाइपरट्रोफिक एनल पेपिलर है, वो होगा। पहली बात तो डेंटेड लाइन पे होता है, छोटा छोटा प्रोजेक्शन होगा म्यूकोजल तो। यस सर। सेकंड वन इज रेक्टल पॉलिप। छोटे बच्चों में जुवेनाइल पॉलिप होता है, बड़े जो एडल्ट होते हैं उसमें एडिनोमा पॉलिप भी रहते हैं, जो हम जब पीआर करते हैं तो स्लीप होते हैं, है ना। आइदर हाइपरट्रोफिक एनल पेपिलर होगा तो यस सर। एकदम पास में रहेगा एनल वर्स से, और रेक्टल पॉलिप रहेगा तो यस वो थोड़ा अंदर की ओर होगा, रेक्टल साइड में रहेगा, है ना। तो उसके यस सर। ट्रीटमेंट होती है एक्सीजन, यानी हम क्या करते हैं कि उसको लेजर से एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि पॉलिप शुड बी एक्सरसाइज। जनरली जो भी पॉलिप्स होते हैं, चाहे वो हाइपरट्रोफिक एनल पेपिलर हो, वो छोटे रहेंगे तो उसको भी एक्सरसाइज करना है हमको लेजर से या कॉटरी से। और रेक्टल पॉलिप है तो उसको हम ट्रांसफिक्स करके फिर एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है ना। हमने डिफरेंशियल डायग्नोसिस में बताया मैडम, वहां पे पाइल्स के डिफरेंशियल यस डायग्नोसिस में सर। हाइपरट्रोफिक एनल पेपिला भी बताया और रेक्टल पॉलिप भी बताया। ठीक है ना मैडम? यस सर। यस, थैंक यू सर। जी ओके धन्यवाद मैडम, डॉक्टर वेरी। साहब। डॉक्टर प्रवीण जी, अपना प्रश्न पूछ लीजिए, और उसके बाद मैं डॉक्टर गीता से आग्रह करूंगी कि वो भी सर्जन है, सर्जरी विभाग से हैं, तो आप डॉक्टर साहब का विश्वारित परिषद की ओर से एक बार धन्यवाद ज्ञापन करें। डॉक्टर प्रवीण, आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। सर नमस्ते, आई एम फ्रॉम बैंगलोर। नमस्ते। सो नमस्ते। स्किन टैग और हेमोरॉइड्स में डिफरेंशिएशन सर, और फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री में ट्रीटमेंट क्या देना चाहिए? हाँ देखिए, स्किन टैग है ना, इट इज एसोसिएटेड विद फिशर इन एनो, है ना। जनरली जो स्किन टैग हम किसको बोलते हैं, बाह्यार्श, यानी जनरली हमारे आयुर्वेद के भाषा में। पर स्किन टैग जो रहते हैं वो जो फिशर इन एनो होता है, क्रॉनिक फिशर इन एनो, उसके साथ रहते हैं। जनरली स्किन टैग जो रहते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर 6 o'clock पे और 12 o'clock पे रहेंगे, है ना। और जो इंटरनल हिमोरॉइड्स रहते हैं फर्स्ट डिग्री, वो अंदर ही होते हैं, बाहर नहीं आते लैट्रिन के वो। सेकंड डिग्री हिमोरॉइड जो रहते हैं, यानी इंटरनल हिमोरॉइड इज कवर्ड बाय म्यूकोजा, एक्सटर्नल हिमोरॉइड इज कवर्ड बाय एनोडर्म और स्किन। तो हमको इंटरनल पाइल्स और एक्सटर्नल पाइल्स में डिफरेंशिएट करते आना चाहिए। और जो टैग है वो फिशर से एसोसिएटेड होगा, वो उसको भले हम सेंटरनल पाइल्स बोलते हैं, बट इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ फिशर। और ट्रीटमेंट पार्ट में जो फिशर है उसमें इंटरनल स्पिंक्टोटॉमी करते हैं हम, और लेजर फिशरेक्टोमी करते हैं, है ना। और अगर इंटरनल हिमोरॉइड्स फर्स्ट डिग्री या सेकंड डिग्री है, फर्स्ट डिग्री तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से अच्छा हो जाता है, सेकंड डिग्री जो है उसमें हम स्क्लेरो करते हैं। ठीक है ना। ओके डॉक्टर साहब, प्रवीण जी। जी 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 थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके 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 डॉक्टर बहुत साहब। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर गीता। थैंक यू मैडम। हाँ जी डॉक्टर गीता जी। हेलो, नमस्ते मैम। हाँ जी बेटा, नमस्ते। नमस्ते सर। ओके, नमस्ते नमस्ते। सर मैं भी सर्जरी डिपार्टमेंट से ही हूँ। ओके ओके, बोलिए सर मैडम, मुझे बोलिए। भी कुछ डाउट्स थे, लेकिन मैं फिर कभी नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी सर। ओके ओके ओके, मेरा सर नंबर बहुत शेयर अच्छा। किया, आप ऐसा पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी जी सर, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया, बहुत अच्छा अपने क्वेश्चंस के आंसर दिए सर। विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कभी सर एक क्लास और
कीजिए सर, हम भी कुछ डाउट्स पूछेंगे आपसे। बिल्कुल, अगला सेशन हम प्रेजेंटेशन नहीं रखेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन ही रखेंगे हम, ठीक है ना? यस सर, यस सर, ताकि सर सबकी डाउट्स जो भी क्लियर। क्वेरी है, हाँ हाँ, एनोरेक्टल से रिलेटेड आप कोई भी सवाल करिए, हम उसका जवाब देंगे आपको वो सेशन में, ठीक है? जी सर। हेतल मैडम, अगला सेशन हम प्रेजेंटेशन नहीं रखेंगे, हम क्वेश्चन आंसर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा वो तो आप रहेगा। कभी भी लेकिन रख मैं सकते हो, डॉक्टर निधि का उसके लिए एक कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं नहीं। ले पाई है ना, और बच्चों ने भी हाँ। थोड़ा सा कोऑपरेट नहीं, कर चाहे दिया तो है। ले सकते हैं, ऐसा कुछ तो प्रॉब्लम नहीं, वो चाहे तो ले सकते क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, डॉक्टर निधि को मैंने लोअर हैंड कर दिया था। डॉक्टर निधि आप वही हो तो पूछ लीजिए। हाँ, यू कैन डॉक्टर आस्क निधि, मैडम। हेलो डॉक्टर निधि, शायद है नहीं, चलो कोई बात नहीं। ओके मैडम, ओके ओके। पुनश्च डॉक्टर आलोक गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इमरजेंसी स्पीकर के रूप में यहाँ अपनी भूमिका बहुत अच्छी निभाई और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्ञान का अवगाहन हो गया। और हमारा ये मंच बहुत अच्छे चिकित्सक निर्माण करना चाहता है, जिससे भारत की राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति जिस दिन आयुर्वेद हो तो हमारे पास भरमार हो डॉक्टर की, बिल्कुल। कि भाई इतने सारी फौज तैयार है हमारी, कि जो भारतवर्ष के हाँ लोगों मैडम, की सेवा कर सके। और हमारे स्कॉलर कहीं ना बिल्कुल। कहीं नॉट अ जॉब सीकर बट जॉब प्रोवाइडर, तो कहीं ना कहीं जॉब देने वाले हाँ, बच्चे हो, ऐसे एक उद्देश्य को लेके विश्व आयुर्वेद परिषद की ये शाखा काम कर रही है गत 10 वर्ष से लगातार प्रत्येक शुक्रवार को 6 PM। और इसके लिए हाँ आपका मैडम, बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। सबसे लास्ट में ओके मैं मैडम। शांति मंत्र ले रही हूँ, आप सभी म्यूट रखकर हाँ ही दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। विश्व मंगल की कामना के साथ आप सभी अपनी अपनी आयुर्वेद के प्रति समर्पण भावना से कोई ना कोई अपनी भूमिका अवश्य निभाते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर गीता धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू।